Mic text. Hello. Mic check. Hello. I love comedy. I love comedy. Comedy is just love, man. I love comedy. I love comedy. Hi. I love comedy. I love comedy. Oh hi. I love comedy. I love comedy. I love comedy. I love comedy. Hi. I love comedy. Hi, my name is Anshul Chandani. I'm a comedian. I've been doing comedy for around 4 years at this point. We're sitting in the green room of U Comedy Club right now, and I'm sitting here to discuss the comedic writing procedure with you. So anytime you go to a comedy show, when you see a comedian on stage, the joke that they say is not the joke that they wrote for the first time. It takes, at least in my opinion, at least 6 months for a joke to become a joke. So all jokes start off somewhere, and I'm going to dive deeper and just segregate into how writing is done. So there's multiple stages to writing a joke. A joke just doesn't conjure out of thin air as the entire joke that it is. Firstly, you get a thought. You get an idea that, oh, this might be a funny thought, this might be something I can turn into a joke. So that's the initial joke. You might call it a one-liner, you might call it the initial premise. So you come up with a premise. A premise is basically when you set up the expectations of the audience, and then you come with a punchline. A punchline is where you break the audience's expectations that you've already set, and that's where the funny comes in. So you start off with a funny premise, you start off with something that can be turned into a joke, then you go on to think of an initial punchline for that premise. So that's where the first draft of the joke is done. Let's say I have a joke I'm going to make, and I have the first line in my mind. But then that's not the joke, that's just a one-liner. So then you go on and add tags to it. So tags is just basically how you can accentuate a joke further. So if I've made a particular joke, but if I want to take it forward, I want to make it a larger joke. The joke I have currently is just 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds. I want to make it a bigger, a larger set in itself. That's why I add tags. So tags is just additional punchlines adding on to the original punchline. And then you keep on adding tags to the joke, and that's when a set is ready. And then you go on and try to set it. Now, this writing process is very tedious because when you try a set for the first time, there's like absolutely no chance that your set will work instantly the first time you try it. So let's say I've written a joke today, I'm going to try the set today. I go on, I try it. I find out there's these jokes that work, there's these punchlines that work, this doesn't work for this joke. There's this tag that works, this doesn't work. There's this direction that works, this doesn't work. So I might go home and I might change the joke altogether, I might make changes to it, I might remove this, I might add this, I might change the placement. But that's just one night. It takes hundreds of these nights to create a proper set. मैं ना मोस्टली स्ट्रीट जोक्स लिखता हूँ. जब मैंने खुद के लिए एक्सप्लोर करा तो मुझे पता चला कि स्टोरी टेलिंग मेरे काम का नहीं है, मेरे नहीं है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा जोक लिख सकूँ. और ये आर्ट फॉर्म का मज़ा क्या है पता है? इसमें ना कभी तुम रिलाय नहीं कर सकते खुद पे. कि जैसे अगर तुम अच्छे सिंगर हो, तुम्हें पता है कि एक टाइम के बाद जब तुम स्टेज पे जाओगे तुम अच्छा गाओगे, लोग अप्रिशिएट करेंगे. पर ये आर्ट फॉर्म ना तुम्हें हर बार एक्साइटमेंट, एडवेंचर और नर्वसनेस, ये तीनों चीज़ साथ में देता है. क्योंकि पूरा गेम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं. 50% तुम्हारे हाथ में, 50% सामने जो बैठी ऑडियंस है ना उनके हाथ में. तुम्हें नहीं पता है कब तुम किल करने वाले हो, कब तुम बॉम्ब होने वाले हो. पर इसी का तो मज़ा है ना. और यही एक्साइटमेंट के साथ जब स्टेज पे जाते हैं और बाय गॉड्स ग्रेस अच्छा परफॉर्म करके आते हैं ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा सुकून. I have with me here my joke pad. This is my writing pad. This is where I write all my material. And I have with me the set list of my show Busted. Now the set list is basically all the material, all the jokes, all the routines that you're going to do in a particular show. So the set list of Busted goes like this. It starts from a joke about PDA, goes on to a joke about Salman Khan, about discrimination, jokes about sex, goes on to an entire bit about sex education in India, goes on about the caste system, and then ends with sexual assault and all of that, blah, 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 blah. So I'm showing you this to show you how jokes are actually written. So we're going to segregate and we're going to bit by bit break down how this is done. लिखते हैं. मैं तो पेन पेपर लेके बैठ जाता हूँ. बेसिकली रोज सुबह उठता हूँ, ट्राई करता हूँ कि रील्स कम देखूँ और सोचूं, बट लिख तो नहीं पाता हूँ बेसिकली रोज. बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही एज ए कॉमेडियन मैं बहुत आलसी हूँ लिखने में. तो कि कभी लिखता हूँ महीने में 5 दिन कभी लिख दिया, और कितनी सारी चीज़ें मैं ऑन स्टेज आ जाती है. और मैं ट्राई भी करता हूँ कि स्टेज पे कुछ चीज़ें मेरे साथ मटेरियल जो मैं लिख रहा हूँ उसके साथ ऐड हो जाए, टैग ऐड हो जाए, या कोई नई पंच लाइन ऐड हो जाए.
तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैं ये सब चीज़ें ना जितना, जैसे पर्सनली मेरा फेवरेट ये है कि मैं अगर स्टेज पे कुछ बना रहा हूँ तो वो ज़्यादा फनी लगता है मेरे को वर्सेस जो मैं लिख रहा हूँ, मुझे उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और लिखने का मैं बाकी कॉमिक्स को देख के भी सीखता रहता हूँ और बाकी सारे लोगों से इनपुट काफ़ी मिलते हैं। जैसे मेरे दोस्त भी हैं, उनके साथ मैं बैठ के मतलब रोज़ हम लोग चाय पे बैठ कर डिस्कस करते हैं कि भाई ये लिखा है नया, ये लिखा है नया, तो वो कितनी बार टैग ऐड दे देते हैं हमको, हम उनको टैग दे देते हैं और फिर हम लोग झगड़ लेते हैं कि जो मेरे को दे यार। So let's say I'm going to pick up this bit about, let's say I'm going to pick up my PDA bit, my first bit. So this bit originally started off as something like this. So it's just all the jokes, this is all the material, these are all jokes, just jokes. And I showed you empty pages when I said jokes, so that's bad on my part. But yeah, this is basically how all jokes start. So this is, I was attempting to write a joke about the Coldplay concert. I got the tickets, of course, I'm rich. And so I was just sitting down, I was jotting down things as to what aspects I can follow with a joke. So usually how a joke is done is you get an idea. You get an idea for a joke. And then with that you follow different directions as to how I can make this into a joke. Like let's say I want to make a joke about, women discrimination, I want to make a joke about the gender pay gap. So I'll break down ideas and directions that I can follow with this particular topic. So this is what I've done here. I've written down the different segments with the Coldplay joke that I can follow, and then nothing worked out with this joke, but then I have multiple jokes. So this is an entire written set right here. So jokes start off with just a thought. It can be a funny thought or it can be an idea that I want to make a joke about this particular sector. You change whatever you think needs changing, and then you add that change, you try it again, and you try it again the next night and the next night and the next night. It takes, as I said, at least 6 months, what I believe, to make a joke a proper set. And once that set is done, you just go on and try it on stage. You have that entire set ready. So that is, I think, the 4 stages of how a joke is conjured. You get the initial thought, you get the premise, the initial thought, you make the punchline, you add tags, and then it finally becomes a set. So that is, I believe, the stages of how a joke is grown. Justice for all. कॉमेडी में जो जनरली 2 टर्म यूज करते हैं, एक किल होता है, एक बॉम्ब होता है। जब भी कोई जोक्स आपका, जब आप जोक्स कर रहे हो और जो लैंड ना हो जोक्स, जिस पे लाफ वगैरह ना आया, जो आपको एक्सपेक्ट था कि हाँ ये जोक तो लाफ आएगा और वहां पे नहीं आता, दैट इज काइंड ऑफ, मतलब जिसे बॉम्ब बोलते हैं लोग जो कॉमेडी सीन में जनरली। और जो किल होता है, जिस जोक्स पे आपके लाभ आ गए, लोग हंसे, बहुत अच्छा गया, एंड किल। आई थिंक जो बॉम्बिंग जो प्रोसेस होता है, जिससे जनरली ये हर एक ऐसा कोई कॉमेडी नहीं जो बॉम्ब नहीं होता है, हर कोई कॉमेडियन बॉम्ब होता है। तो आई थिंक ये ऐसा होता है, आपकी 10 माइक है तो 5 माइक आपके अच्छे किल गए, 5 बॉम्ब हो, तो ये रेगुलर रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये 1 साल 2 साल बाद भी, बहुत सालों तक ये है कि मतलब किल बॉम्ब तो जर्नी के पार्ट है। So this right here is a set that I just recently wrote, and if you want to see, this is the premise right here of the set, and then these are all the ideas that I've jotted. I'm not going to show you my joke, fuck off, pay money, watch this joke. But these are all the ideas that I've written down on the joke. And usually when you write a joke, there's multiple tags that you write. So there's this tag about terrorism, like assault and all of that. So there's these tags. But when you try this set out, not every tag will work. Yeah. The initial joke works, and then you put a tag, it doesn't work. But the tag after that works. So the initial joke and then you add a one-liner joke after it might not work. After that might work. So you go home and then you cut all the tags that don't work. You cut out these tags. You make change. I have a saying, this is something I came up with in this entire comedy career of mine, that a joke is never perfect. I believe a joke is never perfect because a joke always has scope for changing. Whether it be a 6-week-old joke, a 6-month-old joke, or a 6-year-old joke. It always has scope for change, it always has this gap of cutting something out and getting something in. So this is a continuous process of rewriting and evaluating the joke. So tags and jokes and ideas are always going to be cut out of a particular joke. So that's just how the joke writing process is. It's very, you have to become critical of your own sense, and you have to accept that, oh, this is not funny, I have to let it go. This idea that I came up with, it's not funny, it hurts a bit, but you have to let it go if it's not working. So it's very self-critical in that. There are many ways of writing a joke. Like कोई लोग ऐसा पहले पूरा स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर जाके ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उनकी पंचलाइन वर्क कर रही है कि नहीं, टैग्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग जोक लिखते हैं। बट मेरा थोड़ा अलग है। लाइक ये भी एक स्टाइल है कि मैं पहले स्टेज पे जाता हूँ एक टॉपिक लेके और उसके बारे में सिर्फ बोलता हूँ, और जो भी उसमें मेरे को फ़नी लगता है वो मैं नोट कर लेता हूँ, जिस पे लाफ आता है वो मैं नोट कर लेता हूँ।
और फिर बाद में मैं उसको कंस्ट्रक्ट करता हूँ कि ये ऐसा फ्लो रहेगा, यहाँ जोक आएगा और यहाँ टैग आएगा, यहाँ वो सब गालियाँ भी सब स्टेज पे ही निकलती है और फिर उस तरह से ही जाती है लाइक। और पर्सनली मेरा थोड़ा डार्क कंटेंट और ये थोड़ा बहुत कर्सिंग मेरे जोक्स में इसलिए रहता है बिकॉज आई वांट कि वो एक अनएक्सपेक्टेडली एक गालियाँ या अनएक्सपेक्टेडली एक अलग सा ट्विस्ट है जो थोड़ा डार्क हो, जिससे एक इमोशन स्पाइक करना मुझे चाहिए होता है कि लोगों का इमोशन स्पाइक हो, ठीक है। तो मैं ऐसा जोक मेरी गाली नहीं होती है, ठीक है, मेरे जोक में गाली नहीं होती है, बट मैं खाली गाली को यूज़ करता हूँ ताकि वो चीज़ थोड़ी So फनी much, I लगे। have one question. How people perceive your jokes? So, how do people perceive my jokes? So, very honestly, in all honesty, the kind of material that I do, it's more on the the darker, the more offensive, the more blue material side. So it's all jokes about things you cannot talk to your family about. It's jokes about things that you cannot discuss publicly. So usually, if not the right crowd, these jokes are perceived very differently. But again, I believe it's a comedian's skill and it's a challenge that I take onto myself to get the audience accepting of काफी even सारे these लोग बोलते हैं ना कि भाई तू गाली क्यों यूज कर रहा है या व्हाई यू आर डूइंग डार्क मटेरियल ये सब, बट यू नो एवरी टाइम इट्स नॉट लाइक दैट कि गाली यूज कर रहे हैं मीन्स चीप लाफ के लिए कर रहे हैं कि लोग को मजा आए, बट दैट्स द वे हाउ वी टॉक ना कि फ्रेंड्स में भी हम बात कर रहे हैं तो हम गाली दे के ही बात कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट वी डू ऑन स्टेज। जैसे कि आप दिल्ली वगैरह जाओ है ना, तो वहाँ का उसका एक्सेंट गाली वाला ही रहता है कि भाई गाली दे के बात करो, दैट्स हाउ वी टॉक। और सेकंड पॉइंट है कि डार्क मटेरियल अभी बहुत लोग कर रहे हैं ना, पंचिंग डाउन रिलीजन पे, पॉलिटिक्स पे, सेक्स पे कर रहे हैं, बट आई थिंक जोक को आप उतना ना मतलब वो डिमीन मत करोगे यार, आपने किसी रिलीजन पे कर दिया, किसी और पे कर दिया, दैट्स नॉट गुड। अगर आपने जोक किया और लोग हंसते हैं, दैट्स हाउ इट वर्क्स, वही ट्रांजेक्शन है। उसके बाद मत उसमें डीप में मत चले जाओ कि यार इसका ये मतलब हुआ, इसका ये भी मतलब हो रहा, दैट्स द थिंग। और आजकल लाइक इंडिया में और बाहर तो बहुत टाइम से चल रहा है, इंडिया में डार्क मटेरियल इज लाइक बहुत थिंग ना, बहुत लाइक इसमें भी जॉनर होता है, लाइक कॉमेडियंस का भी अलग अलग वो होता है कि कोई लाइक क्लीन ही करता है, कोई फैमिली के ऊपर जोक करता है, कोई सिर्फ डार्क ही कर रहा है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। I will give you a house tour of my multi-billion-dollar house, and this is the multi-billion-dollar room where all the jokes are created. This is the writer's room. I'm kidding, this is my bedroom. Come over here and you see something which is fairly interesting from a comedian's point of view, from some audience member's point of view. This is my whiteboard, and you can see here that I use this for all sorts of comedy purposes. So right here is something inspirational which I don't want you to see. This is just some, goals, I guess, to-do list. And this right here is when I was thinking of a show name when coming up with my show. This is the most important, the most interesting part of my room. This is my desk. This is where I sit. This is where I sleep. This is where I write. The more important one, this is where I write comedy. And this is where I don't study, even though I have this fat ass textbook with me, I don't study. And so this is the poster. This is the first poster to my first ever solo. This is the latest version with the reviews and everything. This is a book that I like. This is a pen. Ganpati Bappa, Krishna Bhagwan. And this is my comedy notepad. This is a journal. This is some rough pages. And this is another journal. And these are other two books that I like to read. Right here, some stuff. Oh yeah, this is a cool thing that was given to us by Cheesebox Studios when they were closing down. And this is just a way of saying that you are joke appreciators. You don't make jokes. It's like you're not funny enough. You just appreciate jokes. Like, sure. And they give me 4 of them. Dude, itna to unfunny. If I'm the lead in Mudit's documentary, I am definitely funny. And this is some trash. Whenever I have writer's block, creative block, whenever I can't think of a joke, whenever I can't think of how to proceed with a particular joke, it's the worst thing ever. And in that scenario, I do a lot of things to cope with it. Mainly, I want to kill myself in the moment. Everybody's frustrated. It happens to everybody. Creative block is a very common thing between artists. At that time, I'm a guitarist as well. I'm a guitarist and a drummer. So I have my guitar right here. I play the guitar for a while. I take my mind off things. I watch somebody else's comedy special. I love Louis C.K. I love Shane Gillis. I watch their specials sometimes for inspiration. Shane Gillis' special, Beautiful Dogs, and Louis' special, Back to the Dolby Theatre. My favorites. I watch these and I'm frustrated. I bang my head, I play around, I fiddle around with things. I have ADHD, I think. So I
whenever you're not getting a joke, you will do all sorts of things to take your mind off it so you get a joke. It's a weird process, but that's just how it is. No justifying that. अभी वन स्टेज पे आई एम द नेक्स्ट. अब पता नहीं यार, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है. अब मेरे पे प्रेशर है, मुझे भी सेम करना है, पर कर लेंगे, कोई दिक्कत. What's up? What's up? कैसा रहा शो? So, भाई brilliant show. Love the crowd. Always Sip Up में हमेशा चुमा crowd आती है. And of course, I'm killer comic. नहीं सुन रहा? क्या बोलेंगे आप लोग? Yeah, always good audience and good comic. Killer crowd. Loved it. Tried some new material. मजा आ गया. Old material worked, new material worked. Right, मजा आया. यस दिव्यजीत भाई, लोकल ओपन माइक कॉमेडी का सीन क्या है अहमदाबाद में? लोकल कॉमेडी ओपन माइक तो लाइक पहले से तो काफ़ी बूम कर रहे हैं. लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे वेन्यूज़ खुले हैं. अपने यहाँ यू कॉमेडी क्लब है, पर्पल बनाना कॉमेडी क्लब है, एक सी से कॉमेडी क्लब है. ये सब ने अपने अपने ऐसे कॉमेडी क्लब बना दिए हैं और हर वीकेंड्स माइक्स करवा रहे हैं. बट ओपन माइक सीन क्या होता है? इस कॉमिक को क्या लगता है ओपन माइक मतलब सीन? जैसे ही तुम लोग जाकिर खान, बस्सी, अभिषेक उपमन्यु इन लोगों को देखते हो, तो ये लोग भी सब यही प्रोसेस से निकले होते हैं कि लाइक 5 मिनट का स्टेज टाइम होता है. तो वो 5 मिनट में तुम्हारे नए जोक्स ट्राई करने हैं. 7 मिनट का होता है कोई कोई जगह पे, तो तुमको वो 5-7 मिनट में नए जोक्स ट्राई करने हैं. कुछ अगर तुमको अलग तरीके से डिलीवर करना है, तुमको वो ट्राई करना है. और तुमको काफ़ी सारे लाइक कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं कि तुम्हारा बेस्ट क्या है, तुम्हारा बेस्ट डिलीवरी क्या है, तुम वो जोक को बेस्ट तरीके से कैसे मतलब लिख सकते हो, उसका एक नया एंगल सोच सकते हो, वो सब तुमको करना पड़ता है. और लाइक एक जोक को बनने में एटलीस्ट तुमको कोई टाइम नहीं है. एक लाइक 2 साल बाद भी एक टैग आता है, बट ऐसा 3-4 महीना तो मिनिमम लग ही जाता है एक जोक को बार बार कम से कम 100-150 बार करना पड़ता है, तब जाके वो एक अच्छा बनता है, लाइक कुछ बनता है. और उसके बाद उसको और फिर रिफाइन करना पड़ता है. तो लाइक वही है कि तुमको अगर बेस्ट 45 या बेस्ट 50 बनाना है, तो उसके लिए तुमको वही कंटिन्यूस ओपन माइक करते रहो, नए नए जोक्स ट्राई करते रहो, अलग अलग ऑडियंस में ट्राई करते रहो, सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ते हैं. सो ओपन माइक में अनलिमिटेड टाइम होता है या कि टाइम नहीं, मतलब ऐसा है कि पर हेड 5 मिनट, पर हेड 7 मिनट, ऐसा सभी टाइम सब जगह मिलता है. और लाइक कहीं कभी क्यूरेटेड शोज होते हैं जिसमें 15-20 मिनट मिलते हैं, जहाँ तुमको अपने बेस्ट जोक ही करने पड़ते हैं कि भाई ये अच्छा जोक है जिसमें तुमको कॉन्फिडेंट होगी, तुम ये काफ़ी टाइम से कर रहे हो. हर जगह चलता है, तो उस टाइप के जोक्स करने पड़ते हैं. हालांकि मेरे पास वैसे जोक्स नहीं है, तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाता. मैं हर जगह हक देता हूँ. ओके थैंक यू एंड बी कंटिन्यू. I'd like to talk about some everyday little struggles that comedians face, which are little when you are introspective, but it's a problem for comedians. So, talking about myself, I am in second year of university. I am in Ahmedabad University. I'm a student, and I of course live with my parents. So one of the things is that every weekend there's like a couple of shows. There's 3-4 shows every weekend, every day on the weekend, and sometimes these shows might move on to longer times. Like sometimes they might end at 12, 12:30, 1:30 even. So one of the things is my parents don't like me staying out for that long. My parents have to stay up until I get back home. So that's an issue. That's something I have to battle with because I have to make sure I get back on time because my parents are awake for me and I have to look after their health as well. But also I have to do my job as a comedian. So I have to do what I have to do. Another thing is these shows start by 7. Some shows start by 7, some start by 8, and these venues are half an hour away. You have to reach 10 minutes earlier and whatever. So you can't have dinner at home. You can't have dinner at 6:30 and leave. So that's another thing that my parents are facing an issue with, is that you don't have dinner on time. You have outside food every single day. So that's a struggle. And then in Ahmedabad, there isn't much of a party culture. There isn't much of an event culture. But whenever there are parties or events, they're on the weekends as well. And we have shows on the weekends as well. Like just yesterday, I had an event to attend. I was invited to an event by Capsule India, and they had a good DJ gig. The DJs were my friends. They had invited me. I went there, but I had to leave in half an hour because I had another show to go to. I finished the show. I went there and I left in half an hour. So that's something that you have to balance. You have to balance your student life as well. You have to balance. I have tons of assignments piled up. You have to balance your social life. You have to balance family and health. So there's just a lot that comes with being a comedian at this stage, because at this stage you're not really a famous comedian, but you're not really a beginner as well. You're just somewhere stuck in the middle waiting for the right moment to strike. So this is something I face currently as a comedian in Ahmedabad, and I hope it gets better for me. I hope it gets better for my family, for anyone that's associated with any of these problems with me. And even though there's these problems,
they pay off. Even though there's these problems, comedy pays the fuck off. Comedy is a brilliant art form, and I'm so grateful to anybody that's allowed me to become a comedian. I'm so grateful to Mudit for allowing me to document this, and I'm so grateful to this door opening right now that's disrupting the audio. Woo! सो सुनील भाई कॉमिक्स का मोनेटाइजेशन अर्निंग प्रोसेस क्या है, सीन क्या है अहमदाबाद लोकल कॉमिक्स का और दूसरे डिफरेंट सिटीज़ के कॉमिक्स का? तो फिलहाल अहमदाबाद लोकल कॉमिक्स का तो लाइक यहाँ पे अभी कोई हाईली टिकट सेलिंग कॉमिक नहीं है, तो हमारा अर्निंग स्टैंड अप के थ्रू ये रहता है कि लाइक कभी किसी का ओपनिंग किया तो उसका थोड़ा बहुत मिल जाता है, कभी कभार कोई कॉर्पोरेट आ जाता है छोटा मोटा तो उसका हो जाता है। ऐसा करके यहाँ अहमदाबाद के कॉमेडी सीन का ये अर्निंग है, और कोई टिकट सेलिंग तो भी यहाँ पे नहीं है। लाइक दूसरे जो बोल रहा था तू कि लाइक कॉमिक का अर्निंग कहाँ से आता है इन जनरल, तो वो टिकट सेलिंग से भी होता है, कॉर्पोरेट सोर्स से भी होता है, यूट्यूब अर्निंग भी होता है, अगर वीडियो अच्छा खासा चल जाए तो उससे भी होता है। और अभी तो कॉमिक्स लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, शो होस्ट कर रहे हैं, टीवी पे है, अभी इंडिया का कॉमेडी सीन आगे है बहुत। सो रैपर्स के साथ कॉमिक्स भी पैसा कमा पा रहे हैं? There's just so many fuckers using bikes in my society. I hate it. Anyways, this has been the documentary about a comedian's life in Ahmedabad. This is how comedians go about it their day. This is how comedians work in comedy. And if you liked it, you can follow any of the comedians that were mentioned in the documentary. And my name is Vansh Mulchandani. If you like some of my work, if you want to check out my work, please come watch my live show. It's called Busted. You can find all my links on my social media. Busted is also an officially Book My Show recommended show. This is all plug. I'm just plugging my stuff. Please do check out my stuff. Come watch my live show. And Mudit, get out. Fuck off. Hey Vansh, hey.